Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about working of institutions, means हमारा discussion official memorandum से शुरू हुआ था. An official memorandum related with reservation of 27% seats for SEBC, socially and educationally backward classes. Okay. After that, we discussed about the different institutions related with taking decisions. Okay, means in the working of institutions, we discussed about the parliament, the role of parliament in different decisions, parliament as an institution. Okay, after that we discussed about the council of ministers, the formation of the council of ministers. Yani for taking different kind of decisions, there are different kind of arrangements. Guys, in a democracy, for people, the government have to make different kind of policies. And for making these policies, the government have to take different decisions. Okay, some are responsible to take the decisions, some are responsible to implement them, and in this way there is a group of different kind of people, means different groups are there, and these groups are responsible for taking decisions, and these groups or this arrangement of taking decisions is referred as the institution. Okay, parliament, council of minister का discussion already हो चुका है. Now as the next we are going to discuss about the prime minister. Okay, the powers of prime minister, or we can say that PM. Which kind of powers are enjoyed by a prime minister? So guys, first of all, if we talk about the appointment of the prime minister, then we have discussed that the prime minister is appointed by the president, means Indian president is responsible to appoint the prime minister. भारत के प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. ओके, और इसमें हमने डिस्कस किया था दैट इन आर्टिकल 75 सेक्शन 1 इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री along with his council of minister is appointed by the president. Okay, and for the appointment of the prime minister, the president have to keep one thing in his mind, and that is the leader of majority of seat scoring party. Okay, majority of seat scoring party in Lok Sabha should be appointed as the prime minister. Okay, यानी प्रेसिडेंट बाउंडेड है, प्रेसिडेंट के लिए कंपल्सरी है लीडर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सीट स्कोरिंग पार्टी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना. सिंपल सा पॉइंट. ओके, after the appointment of the prime minister, the other ministers are appointed on the advice of the prime minister. So this thing we can mention here as the part of the powers of the prime minister. Okay, यानी ये prime minister की power का ही एक part है, and that is related with the appointment of other ministers. Okay, तो prime minister की जो first power है that is appointment of other ministers. Okay guys, appointment of prime minister is a power, appointment of other ministers is a power related with both prime minister and the president. ये दोनों से related होता है. okay, और इसमें होता एक्चुअली क्या है, on the advice of prime minister, the president appoint ministers, other ministers. Okay, or we can say that
the Prime Minister suggests some names. Okay, the Prime Minister suggests some names to the President. Okay, and President appoint them as the ministers. यानी simple सा point है. The other ministers are appointed by the president, but here the president have to follow the advice of the prime minister. In this way, the actual power is there in the hands of the prime minister. Okay, यानी बाकी ministers का जो appointment है वो president के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस appointment में suggestion किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का. नेम्स कौन सजेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर. और जो नेम सजेस्ट किए जाएंगे उन्हीं को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा. सो इन दिस वे द फर्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स. ओके, अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of the prime minister. We can say that prime minister suggests some name to the president and president appoint them as the ministers, and in this way this is the first power of the prime minister. Okay, now after that the next power. Okay, ministers के appointment के अलावा भी council of ministers से related other powers prime minister के पास में होती हैं. Okay, and the next power is the distribution of works. Distribution of work between the ministers. Okay, after the appointment of different ministers, the prime minister is responsible to distribute work among these ministers. Okay, इन ministers के बीच में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्राइम मिनिस्टर की होती है. यानी सिंपल सा पॉइंट है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स, पोर्टफोलियोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट. ओके, तो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बाद ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन से मिनिस्टर के पास में कौन सा डिपार्टमेंट होगा, विच काइंड ऑफ मिनिस्ट्री विल बी हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर मिनिस्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज इज ऑल्सो अ पावर रिलेटेड विद द प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो सारे पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एडवाइस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर. सो इन दिस वे एक्चुअली दिस पावर इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द prime minister. Prime minister decide the ministries. Okay, and on the advice of the prime minister, the president distribute these ministries, these portfolios among the ministers. Okay, now after that the next point. तो guys, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकी मिनिस्टर्स के नाम सजेस्ट करता है. मतलब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि उसकी पार्टी से कौन सा लीडर मिनिस्टर बनेगा. ओके, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन सा मिनिस्टर क्या होगा. मतलब वो स्टेट मिनिस्टर होगा या डेप्यूटी मिनिस्टर होगा या फिर कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और इन मिनिस्टर्स में उसके पास में कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी. इट इज़ कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. ओके, और ये डिवीजन किया किसके द्वारा जाता है? बाय द president. Okay, so for division president is responsible, and for this division he have to follow the advice of the prime minister. Is that clear? Okay, now after that the next point is related with chairing the meetings of Council of Ministers. Okay, the Prime Minister chairs the meetings of Council of Minister. The Prime Minister chairs the meetings of Council of Minister, or we can say that in the meetings of Council of Minister, the Prime Minister remain the chairperson. Okay, यानी जो भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स की अध्यक्षता, उनको जो चेयर करने का वर्क है, जो पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है. द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द एंटायर एजेंडा ऑफ द मीटिंग. ओके, मीन्स वी कैन से दैट इन दिस मीटिंग only the agenda, the issues
पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर डिस्कस्ड। यानी इस मीटिंग को चेयर भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं और इसके अलावा इन मीटिंग्स में जो भी डिस्कशन होता है एंटायर डिस्कशन इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, मीन्स ऑन विच इशू देयर shall be a discussion in the meetings of council of minister or the meetings of cabinet is decided by the prime minister। यानी मीटिंग का कंप्लीट एजेंडा प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है और प्राइम मिनिस्टर की विशेस के अकॉर्डिंग ही उस मीटिंग में डिस्कशन होता है अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। Is that clear? So prime minister chairs the meetings of the council of minister and he is responsible to decide the agenda of the meeting. Only the agenda or the policy decided by the prime minister are discussed in the meetings। Is that clear? So prime minister is responsible for the appointment of the ministers, means he suggests some names as per his wishes and they are appointed as the ministers by the president। After that prime minister suggests the president how to distribute the ministries among these ministers and after that प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर इन मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है और प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि किस पॉलिसी के ऊपर किस एजेंडा के ऊपर उस मीटिंग में डिस्कशन होगा और जैसे प्राइम मिनिस्टर की विशेष होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उस मीटिंग में डिस्कशन होता है। एंड वन मोर थिंग, कैबिनेट मीटिंग्स में अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको स्पेशली इन्वाइट किया जाता है। Is that clear? Okay, now after that the next power of the prime minister is related with president and the council of minister। okay, मतलब इन दोनों से रिलेटेड एक पावर है प्राइम मिनिस्टर की, that is the prime minister serve as a link between president and council of minister। okay, this is also a very important power related with the president and that is the president serve as a link or as a medium of communication between the president and the council of ministers। okay, means we can say that the president deliver his suggestions to the council of ministers with the help of the prime minister। okay, and the president can ask about the working of council of minister to the president। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने सजेशंस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए उनको डिलीवर करने के लिए जो मीडियम यूज़ करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसके अलावा इफ़ प्रेसिडेंट वुड लाइक टू नो एनीथिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अबाउट द वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन he will ask it from the prime minister। okay, so in this way prime minister serve as a link between the president and the council of minister। सिंपल सा पॉइंट है, the president can ask about working of council of minister from the prime minister। along with that the prime minister inform about the suggestions of president to the council of minister। okay, मीन्स जो भी सजेशंस प्रेसिडेंट के होते हैं उन सजेशंस के बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही इन्फॉर्म किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो गाइस हमने पहले ही डिस्कस किया था दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द president। okay, and at the time of appointment of the prime minister the president have to keep one thing in his mind and that is the leader of majority of seat scoring party in the Lok Sabha is appointed as the prime minister। तो इसका मतलब ये हुआ कि
प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का लीडर होता है जिसके पास में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, एंड इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो रेफर्ड एज द लीडर ऑफ लोकसभा, और वी कैन से दैट लीडर ऑफ द हाउस. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर इज रेफर्ड एज द लीडर ऑफ द हाउस. प्राइम मिनिस्टर को हाउस का लीडर भी कहा जाता है. ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मीटिंग्स को चेयर करता है. उन मीटिंग्स को जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उस पार्टी को लीड करता है जिस पार्टी की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, एंड इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर इज रेफर्ड एज द लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ लोकसभा. ओके, द एंटायर proceeding of meetings of Lok Sabha, okay, the entire proceeding of meetings of Lok Sabha are decided by the speaker on the advice of the leader of the house, or we can say that on the advice of prime minister. okay, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि उस लोकसभा की मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा. यानी जो डिस्कशन लोकसभा की मीटिंग्स में होते हैं, ऑल दीज डिस्कशंस आर डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. उनके कंप्लीट जो उनको डिसाइड करने का जो अथॉरिटी होता है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओके, नाउ आफ्टर दैट एज द नेक्स्ट पावर we can mention here the power of appointment. okay, power of appointment. तो एक्चुअल में power of appointment क्या होता है? guys, if we talk about the president, then the president make different kind of appointments. okay, the president appoint different officers. अलग अलग ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट द मिनिस्टर्स. ओके, along with that president appoint the chief of UPSC, president appoint the chief of CBI. okay, and along with that president also appoint the chief election commissioners. okay, chief election commissioners are appointed by the president. okay, and all these kind of appointments are made by the president on the advice of prime minister and his council of minister. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी एक्चुअल में डिसीजन वही लिया जाएगा जो किसके द्वारा फेवर्ड होगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. सो इन दिस वे द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट विच इज प्रोवाइडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, which is provided to the president by the constitution is actually used by the prime minister. okay, यानी जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स like appointment of the ministers, appointment of governor of the states, appointment of judges of Supreme Court, along with that appointment of chief election commissioner, chief of UPSC, chief of CBI. okay, different kind of appointments are there and all these appointments are made by the president. but actual में president यहाँ सिर्फ नेम की पावर को एंजॉय करते हैं, यानी उनका सिर्फ नाम होता है. एक्चुअल में ये पावर किसके द्वारा एंजॉय की जाती है? बाय द प्राइम मिनिस्टर. इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज इन दिस वे द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी मोस्ट ऑफ द पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास में होती हैं. ओके, यानी जैसे हमने डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट the cabinet is the most powerful part of council of ministers. okay, council of ministers जो होती है उसका most important part होता है cabinet. okay, in the same manner, yani means the powers of the council of minister are actually enjoyed by the
cabinet in the same manner the powers of cabinets are used by the prime minister alone. यानी in the council of minister the cabinet is the most powerful unit. In the same manner in the cabinet the prime minister is the most powerful one. Okay, the entire powers of the central executive are provided to the president, but actually all these powers are used by the prime minister. And in this way sometimes the democracies present at present, okay, means the democracies in which prime minister is present is referred as the प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. यानी एट प्रेजेंट जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी बढ़ती जा रही है कि समटाइम द प्राइम मिनिस्टर इज रेफर्ड एज द समटाइम द डेमोक्रेसी इज रेफर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. यानी इसको जैसे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी आजकल रेफर किया जाता है, क्योंकि इन डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टर ही सबसे ज़्यादा पावर्स को एंजॉय करता है. एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज स्ट्रेंथन्ड बाय द मीडिया ऑल्सो, क्योंकि मीडिया जो होती है वो भी जो दो पावरफुल पार्टी होती हैं उनके जो पावरफुल लीडर्स होते हैं उन्हीं के बीच में जनरली इलेक्शन के कंपटीशन को सेंटर्ड करती हैं. फॉर एग्जांपल इन द इलेक्शन ऑफ 2019 इंडिया में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी से नरेंद्र मोदी जो लीडर हैं बीजेपी पार्टी के उनको रखा गया था, दूसरी साइड से राहुल गांधी जी को रखा गया था. तो जो मीडिया है वो भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यानी किसी भी डेमोक्रेसी को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रेफर करने में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो गाइज इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद डेमोक्रेसी. ओके, और प्राइम मिनिस्टर ही सारी पावर्स एंजॉय करते हैं. लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है वो कॉलिजन गवर्नमेंट में नहीं होती है. एक्चुअली एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो जो पावर्स एंजॉय करता है वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी पावरफुल लीडर, was a very powerful prime minister, okay, enjoyed a lot of power when she was the prime minister of the country. In the same manner Jawaharlal Nehru also enjoyed a lot of power, okay. लेकिन उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स बने थे उन्होंने पावर्स को उस वे में एंजॉय नहीं किया जैसा कि इन लीडर्स ने किया था. यानी उनकी खुद की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है. इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट है या कॉलिजन गवर्नमेंट, यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं. मतलब एक ऐसी सिचुएशन when no political party is able to get the clear majority in Lok Sabha, then the different political parties come together to form the government, and this kind of government is referred as the coalition government. यहाँ two words होते हैं. First one is alliance. Okay, यहाँ पे दो words आपको माइंड में रखने हैं. First one is alliance और एक होता है कॉलिजन. यदि कोई भी मतलब जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इफ़ दे जॉइन हैंड्स टुगेदर टू कंटेस्ट द इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले ही साथ में आकर के चुनाव लड़ती हैं बाय डिवाइडिंग द सीट्स, देन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज अलायंस. ऐसी गवर्नमेंट यदि बाद में बनती है तो वो अलायंस होता है. और यदि इलेक्शन जीतने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर के चुनाव लड़ती हैं देन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज द कॉलिजन गवर्नमेंट. ओके, कॉलिजन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पावर कम होती है. एक्चुअली इन अ कॉलिजन द प्राइम मिनिस्टर हैव टू थिंक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच आर देयर एज द पार्ट ऑफ द कॉलिजन. ओके, यानी कॉलिजन गवर्नमेंट जो होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर्स की कुछ लिमिट्स होती हैं. मतलब प्राइम मिनिस्टर की पावर्स में लिमिटेशंस आ जाती हैं. ही कैन नॉट वर्क एज पर हिज विशेस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अदर पार्टीज़ के बारे में भी सोच करके चलना होता है. अदरवाइज द कॉलिजन पार्टी विल पुल द हैंड्स बैक एंड इन दिस वे द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन बिकॉज ही विल लूज द मेजॉरिटी. इज दैट क्लियर? तो गाइज प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेसी का और प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत सारी पावर्स भी होती हैं. ओके, तो हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में. ओके, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड विद द प्राइम मिनिस्टर.
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ही होता है, उसके बाद ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। ओके, उनके बाद उनके बीच में मतलब एक समरी देखते हैं अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, और प्राइम मिनिस्टर जनरली लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ सीट स्कोरिंग पार्टी होता है, और इनके अपॉइंटमेंट के बाद बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की नेक्स्ट जो फर्स्ट पावर होती है दैट इज related with the appointment of different ministers. Okay, now the second power is distribution of portfolios, ministries, departments between the ministers by the president on the advice of the prime minister. Along with that, he chairs the meetings of the council of minister. Power of appointment of the president is also enjoyed by the prime minister. Prime minister will work as a link between the council of minister and the president. Okay, along with that, the prime minister is also referred as the leader of the house. Okay, तो ये सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है और इन सारी पावर्स को प्राइम मिनिस्टर एंजॉय भी करता है। इज दैट क्लियर? सो गाइज, इन दिस वे, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द prime minister, means which are the major powers provided to the prime minister, which are the major powers enjoyed by the prime minister। यानी कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर पावर्स एंजॉय करता है, और उसमें प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो सिर्फ नेम नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास में होती हैं। सो गाइज, this is the end of this video. In the next video we will discuss about the president and about the powers of the president. So guys, if there will be any doubt in your mind related with any power of the president, any topic, then you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So guys, stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.